Good morning, students. Today I will explain you how we make a graph. So I explain bar graph, how we draw the bar graph on graph sheet. I will explain you in the briefly, and I also explain the each step. So our first step, to draw a two perpendicular lines. One line is horizontal and one is vertical. So this is our first step. This is horizontal line and this is vertical lines. Okay, so data has two parts. First is the information of an object. Second is number of that objects. First is name of item and name of information, and second is numbers. So in generally we represent the items or objects on the horizontal line and their observations representing on the vertical line. Okay, student. So our second step is representation of horizontal and vertical line. What information represents by the horizontal line and what information are representing on the vertical line. So in the fifth sum we have some subjects and marks codes. So horizontal line represent the name of subjects and vertical line marks codes. Okay, this is our second step. Now third step, draw the scale on the vertical line. Our third step is स्केल ड्रॉ करना है हमने वर्टिकल लाइन पर. अब स्केल कैसे ड्रॉ करेंगे, हम अपने डाटा को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो इनमें डिफरेंस है वो ले लेंगे. ठीक है. सो दिस इज द स्केल ऑफ द गिवन डाटा. So each unit represents 10 marks. So how we represent the unit? So in next step we represent a unit. So this is the 1 unit. One outline square box is a 1 unit and 1 unit represents 10 marks. Because why I write here 1 unit represents 10 marks? Because I represent the marks on a vertical scale and each difference in each square has 10. So there is a difference of 10 in each squares. So that's why 1 unit represents 10 marks. Okay. So our next step, draw a bar graph or draw a bars according to their subjects. So in first, general knowledge has 90 marks. So we draw a bar of the general knowledge of the up to the 90 marks. When we draw a bar, we leave the first box and start from the second line. हमने फर्स्ट बॉक्स को वैसे ही छोड़ देना है, सेकंड से स्टार्ट करना है और उसके साथ वाले में एक बार ऐसे कंप्लीट कर लेना है रेक्टेंगल शेप में 90 तक. ओके. सो ये बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जर्नल नॉलेज को. किसी और को अगर हमने अंडरस्टैंड करवाना हो ये बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसके बीच में जर्नल नॉलेज लिख देंगे. ये है हमारा सेकंड स्टेप. सॉरी, सेकंड स्टेप नहीं, नेक्स्ट स्टेप आएगा वहाँ पर. सेकंड स्टेप पे बार बनाने के बाद का सेकंड स्टेप हो गया, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप आएगा. ओके, लाइक दिस जनरल नॉलेज. सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश. वी अगेन leave a 1 unit and draw the next bar graph in between these two lines. Then leave 1 unit, next draw in these two lines. Then again leave and next draw this line. Next this line. Next this line and so on. Okay. So this is the bar graph of the English. Subject is English and score marks 80. So next is mathematics.
So mathematics have 95 scores. We draw the mathematics graph in between 100 and 90. There is a 95. Okay, so we have to draw up to this. Okay, this is a mathematics bar. So this bar represents the mathematics, and mathematics has 95 scores, so 95 lies in between 90 and 100. So midpoint of 90 and 100, 95. So you can also write here 95. Okay. So next subject, science. Science has also 80 marks, that is equal to the English. So this bar up to this. Okay, दिस इज द बार ऑफ साइंस. यहाँ पर हम साइंस की बार बनाएंगे. अब तक हमने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. टोटल 6 सब्जेक्ट हैं हमारे पास. हमने 4 सब्जेक्ट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया है. अब हमारे पास नेक्स्ट है हिंदी एंड सोशल साइंस. हिंदी में है 70 मार्क्स एंड सोशल साइंस में 60. तो 70 वाली जो बार है वो 80 से कम बनेगी यहाँ तक, और 60 वाली यहाँ तक बनेगी. ओके, सो बस इसको हमने रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है बच्चे. तो जो स्केल है हम इसको आंसर के अकॉर्डिंग, जो हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम 1 यूनिट में वेरिएशन कर सकते हैं. कुछ में 1 यूनिट 1 को रिप्रेजेंट करती है, कुछ में 2, कुछ में 100 को रिप्रेजेंट करेगी, कुछ में थाउजेंड्स को करेगी, कुछ में 400 को करेगी, 500 को करेगी. दैट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. ओके, दिस इज द बार ऑफ हिंदी सब्जेक्ट. हिंदी, in the Hindi subject student get a 70 marks, so it's up to 70. Okay, so next social science. Student get 60 marks in social science, so bar should be stopped at 60. Okay, so this bar represents the social science. So we have complete our bar graph. So look at once, this is our bar graph. I think स्टेप बाय स्टेप आपको सबको समझ आ गया होगा हमने बार ग्राफ कैसे बनाना है. सो जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको इसमें मास्टरी होती जाएगी. बार ग्राफ में आपको बनाना इजी रहेगा. आप एक बार बनाओ, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, उसको दोबारा बनाओ, फिर थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम्स. आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप परफेक्शन लाते जाओगे अपने में. ओके स्टूडेंट, सो बाकी आपको आंसर की PDF फाइल में मिल जाएगी. सो ये है आपका बार ग्राफ के बारे में. सो बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन है उनके भी बार ग्राफ हमने ऐसे ही बनाने हैं. सो ये बेसिक कंसेप्ट था बार ग्राफ के बारे में. 1 यूनिट किसे बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या रिप्रेजेंट करना है, वर्टिकल लाइन में क्या रिप्रेजेंट करना है. और एक बात और, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, x axis, and this vertical axis is known as y axis. When we go on higher classes we also study x axis and y axis. Okay, so आपको ये पता होना चाहिए बार ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x axis को रिप्रेजेंट करती है, जो वर्टिकल लाइन है वो y axis को. Is that clear students? So thank you students. मुझे लगता है ये सबको समझ में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा. अगर किसी को डाउट हुआ नीचे कमेंट कर देना. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड.